evening. So today I will start with the screw transformation, that is just after the homogeneous transformation. Here you see the screw transformation. Why the screw transformation is needed? Sometimes we have the end effector, and end effector has such property that it has the linear uh, linear translation in say one axis, and in the same axis there is also a rotation of the end effector. So that makes a screw. And the what is the basic definition of a screw? In the screw, if you turn the screw, a proportional translational movement will be there. So screw transformation is involved in that. So in during the end effectors in the robotic arms, linear motion in the axis of, suppose z axis we are saying, so there will be a linear motion of end effector in the z axis, as well as it will rotate in the direction of rotate in the same axis. Suppose I am telling you through the this board, here you have certain link, and you have end effector this. So suppose this is the end effector, and this can rotate along this z axis. Okay, and this length can also be varied. Okay, along the z axis, the length along the z axis can also be varied, and the rotation along the z axis. So this forms the screw transformation. Okay, this is a type Hello, of screw. Hello, yes. sir. There is a delay and there is a beep sound too. क्या है? Sir, there is a delay in the class and there is a beep sound coming in सर background. आवाज थोड़ा लेट आ रहा है सर, और बीप बीप का साउंड आ रहा है सर पीछे से। यूपीएस का है। एक्चुअली यूपीएस ऑन है, इसके लिए क्या कीजिए? ईयरफोन दे दूंगा सर। ईयरफोन, अच्छा ठीक है, ईयरफोन लाओ। जस्ट आई एम ट्राइंग, एक्चुअली मैं रोबोटिक्स लैब में ही बैठा हूँ, तो यहाँ ये बीप साउंड आ रही है इसकी, यूपीएस की। थोड़ा आप लोग अगर साउंड धीमा कर लो तो। एक मिनट रुको, ट्राई करते हैं। आई एम ट्राइंग फॉर दैट, जस्ट मिनट। अभी क्या साउंड कम है? स्टूडेंट्स, अभी साउंड कम है क्या? यस सर, ठीक है। अब सेटिस्फैक्ट्री है ना, मतलब आप तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही ना उससे? नहीं ठीक है। सो यू हैव अंडरस्टूड दिस स्क्रू. Okay, there is a same one axis along which the translational as well as rotational motion will be there. This is link L, K suppose, and there is a variation in the length of this link,
as well as rotation in the same axis. So this will form a type of screw, and we will use then the screw transformation for that. So screw transformation, suppose that movement of lambda and the rotation of phi along the axis k will be represented by a rotation matrix as well as translational matrix. The multiplication of rotational as well as translation matrix. Translation of lambda along the axis k and rotation of angle phi along the axis k. Okay, so this is the screw transformation, and here you can see the threads per unit length. Okay, threads per unit length is called the screw pitch. Okay, so total angle rotated and the total length covered by the screw. Okay, suppose the movement of lambda is there, so in during the movement of lambda, here you can say that the movement of lambda has led to the angle phi. So the pitch will be defined as rho equal to phi by 2 pi lambda. Okay, so now the screw transformation is also it follows the multiplication, and post multiplication and pre multiplication is equal. Here the translation of lambda units in k direction and rotation of phi degree in k direction will be equal to the first translation and then rotation, and it is the same as the rotation and then translation. Okay, inverse screw transformation. Inverse screw transformation is same as here. You can say that we are moving relative to the fixed frame, moving the end effector related to the fixed frame. Then if we use the screw transformation related to the tool tip and for origin or the rigid body, then there will be the inverse transformation. Inverse transformation, as I had said, that inverse of the translational matrix will be the same as minus lambda replaced in the place of lambda, and inverse will be given by minus phi in place of phi. Okay, now here the you take an example of screw transformation. Here suppose that along the axis 2 there is a rotation of pi by 2 and movement of lambda units. So the new coordinates of relative to the fixed frame, while the coordinates in the moving frame are given 0 0 1 1, then this is the multiplication of two matrices in which one matrix defines the homogeneous transformation for the translational motion as well as the homogeneous transformation for the rotational motion alone. Okay, so this will define a rotation matrix, and this complete matrix will define the homogeneous transformation for the rotational motion only, and this represents the complete homogeneous transformation for translational motion only. Here you can see that the rotation is not there, all the identity matrix are there. So after taking the multiplication, the new coordinates have been estimated as 1301, and in the same manner if you use the reverse sequence, the same will also be achieved in that reverse sequence. So general screw transformation is along the axis k is given by this. Okay, now the link coordinates. So there are two types of joints, that is prismatic and revolute joints, and there are joint parameters. Here the link xk, and this is link xk, and this is the link length dk. Okay, so joint parameters are defined like you can see here the table.
For the convention, we are taking that the joint angle is taken as theta, joint distance, joint to joint distance is taken d. Okay, which is if joint to joint distance is fixed for the revolute joint and variable for the prismatic joint. You can see here. And joint angle for revolute joint, the joint angle is variable, while for the prismatic joint it is fixed. Link length in both the revolute as well as prismatic joint is assumed fixed, means the length of the link is not varying, and for the joint distance is varying in the prismatic joint. Okay, and if it is fixed, then it is not the prismatic joint, it is simply a link. Okay, जॉइंट के बीच की डिस्टेंस कब चेंज होगी, व्हेन दे आर द प्रिज्मेटिक टाइप ऑफ जॉइंट, एंड व्हाइल it is fixed, then it will define the link length. It will be termed as the link, and it will not have the variable value. Link twist angle, suppose that previously the joint is joint axis is in z direction, and after the link, the next link, the axis has rotated from 90 degree. Then what will happen here, there will be an angle alpha between the z axis. Okay, so this is I will illustrate you further. Also I will tell you about the end effector. A wrist is there, and in the wrist an approach vector is there. Suppose we want to take some object, I will show you by suppose we have this end effector, and some object is here. Okay, so what we will do, we will move at first in this direction. So what is this? This is approach vector. Okay, we will move in x direction, that is approach vector. Here you can see in there's a one is approach vector, and this is in the 90 degree orthogonal. What will be this is the normal vector, and that means the link plane. This is the link plane. Okay, suppose that end effector plane is this, and we have to catch some object here. This is placed vertically on some table. Okay, then this is according to the plane of the wrist. This is the normal vector. Okay, and according to the स्लाइडिंग वेक्टर, व्हाट इज द स्लाइडिंग वेक्टर? इसमें एक जो रिस्ट है, आपके रिस्ट मूवमेंट करेगी. ओके, तो सपोज कि ये इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज होता है. अब इसके लिए अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, मतलब पहले तो इधर लाओगे, फिर थोड़ा इसके लिए अलाइन करोगे तो यहाँ तक आएगा. वही चीज मीन्स वही एंड इफेक्टर, यू विल मूव द सेम एंड इफेक्टर in the this position so that it can come in this, and you move here approach vector. Okay, and you have moved like in this direction. तो अब इस यहाँ भी आपने मूव किया, और अगर लिंक लेंथ ऊपर थी तो आपने नीचे किया. तो इन दिस वे देयर इज अ 3 movements in a wrist. That axes are called the approach vector, sliding vector, and normal vector. So now we have the Denovitt-Hartenberg representation. This representation is used for getting the matrices of the any robotic manipulator, and before taking the evaluating the matrices, that is transformation matrices and homogeneous coordinate transformation matrix, we need to represent the robot by some
simple structure. Some simple structure like you have this robot second robotic arm, okay, alpha second robotic arm. Then you have a joint here, revolute joint, one revolute joint here. The axis of this revolute joint is in the direction of this base. Here you can say this is the axis. Now the axis of this shoulder, this is in this direction. Here you the direction will be like this. Same, the direction of the elbow will be in the this direction. Direction of the tool pitch will also be here. Now this tool can move in this direction, but there will also a movement along the this roll. There will also be a roll. So here the 3 axis 1, 2 and 3, these are in the same direction, but this axis has rotated by 90 degree to the this axis, okay. Always the z axis is taken along the joints. This is the DH convention. Always the z axis is taken along the axis of the joint. So for the same, here you can see here first axis here is represented by Z0, okay. Dear students, can you understand this? Please respond. Yes, sir. Okay. So फर्स्ट एक्सिस क्या करेंगे इसमें, इस जो फर्स्ट एक्सिस है स्टार्टिंग फ्रॉम वी टेक द ओरिजिन 0 इन द बेस एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बेस and successive links and successive joints we enumerate 0 1 2 3 and all, okay. We don't start from the tool, we start from the base. Numbering will start from the base. So what will happen, the first axis will be represented in Z0 direction, okay, and the movement of that axis, that link will be horizontal orientation, means it this whole of the structure will move in the horizontal direction, okay. So the rotation angle θ1 is there. Now you see that there is a link, there is one link between zk and zk minus 1, okay. So link 1 will be between the link between the origin of the zk and zk minus 1, okay. तो ये लिंक के होगी LK. तो यहाँ पे Z1 और Z0 के बीच में लिंक 1, ऐसे ही लिंक 2 हो गया, लिंक 3 हो गया, लिंक 4 हो गया, okay. And now here you see the Z1 of this axis. Here you see this axis was here. Now the axis of the shoulder has rotated. Axis of the shoulder has rotated 90 degree comparatively to the Z0 axis. Can you see here? And what is the angle of rotation? Minus 90 degree, because minus 9. Why it is minus 90 degree? Because it is rotating in the clockwise direction. The angle in the clockwise direction is always taken negative, and in the anti-clockwise direction it is taken positive. So the Z1 has rotated, that is alpha. Alpha is here minus pi by 2. Now here the axis has taken again the positions, and the second joint, first joint is here, second joint is here, and there is the rotation angle θ2, okay. Here you can see that this θ2, it can take any angle in this figure. So this is the θ2, here there is the θ1, okay. Similarly, the coordinate second, coordinate system second means x2, y2 and z2.
have the rotation angle theta 3, and the link is A2. A2 link means it is of the fixed nature. Okay, it is fixed in nature. This is not the prismatic, this is fixed, and it is the prismatic, means the point joint to joint distance can be changed, because this is the here you can see this is the wrist. Okay, and the position up and down can be changed. So here the link 5 has variable link. Okay, and also the height of this system can be changed. So you see here the D is the variable length, which is the which represents the prismatic joint. Here you can see D is represented for the prismatic joint. Now I will show you the D represents for here a prismatic joint, which is of variable nature, and A is the fixed. Okay, so if it is linked, it will be given the notation A, and if it is prismatic joint, it will be given the notation D. Okay, so now this joint has rotation angle theta 4, and axis Z3 has rotation angle theta 4, and here you can see that one this is third coordinate frame, and x3, y3, and z3. Here one another coordinate frame is which at the same place, and it coincides with the z3. Okay, the origin of z4 coincides with the origin of z3. So there, which is connected to a tool roll, and the in the direction of tool roll we can rotate the link. Okay, here you can see you can rotate the whole wrist in this direction, and you can also move angle theta 4. Here theta 4 is there. This is the theta 4. Okay, and this is tool roll. तो यहाँ पे एक ही ज्वाइंट में मतलब एक टूल रोल भी हो रहा है उसी ज्वाइंट पे, और उसी ज्वाइंट पे उसका एंगल भी चेंज हो रहा थीटा 4. ओके, so now this is the DH representation for alpha second robotic arm. Then in that condition, what are the variables, what are the joint variables, joint parameters? This is the suppose that there is a 5 axis, one in the base, second in the shoulder, third in the elbow, and fourth in the tool link, and fifth there at the here you see 5 joints are there. Okay, 1 2 3 4 and 5 यहीं पर. तो क्या होगा, उसका जो वेरिएबल है that will be defined by this angle theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, and the distance means prismatic joint जो है, prismatic joint में उसका length क्या है d, if that is prismatic joint, and suppose that it has certain value 215, it is fixed at 215 and it is fixed at 129.5. तो दो जॉइंट जो हैं, दो लिंक उसमें प्रिज्मेटिक हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इज यू सी हियर D1 is 215, this is fixed to 215, and because this is the prismatic joint, so this length can be changed at any time. So suppose it is initially fixed at 215.0, and it can also be changed with the time. So this is D1, and similarly A2, A3 and A4. A4 is here 0. A4 will be 0 because the origin of the two points where the there is a screw transformation here. स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन का जो पॉइंट है रोटेशन का, वो वहीं पर है ओरिजिन.
where the coordinate x3, y3 and z3 is there. तो इसका जो फिक्स्ड लिंक लेंथ है that will be joint to joint distance will be 0, and also the joint to joint distance d will also be 0, because it is not clear whether it is prismatic or it has 0 value. So now the d5 is the distance between the tool and that origin of the z4, between the tool and origin of the z4. ये डैश लाइंस इसलिए दिखाया है कि एट द सेम प्लेस बोथ द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म्स कैन नॉट बी शोन, both the coordinate frames cannot be shown at the same place, so it has given a dashed line that represents it is at the same place. And here d5 will represent d4, this z4 to tool distance. So here for this length is represented by 129.5. Similarly, in between there are two fixed length of the links, that is 177.10 and 177.8, A2 and A3. It can also be different in values. Okay, and now you see here the values of alpha. Here we can see that in z0 axis in upwards direction, and now the z1 has rotated minus 90 degree. Okay, here you can see that the rotation is in vertical axis, however the rotation of shoulder is 90 degree in the direction of the vertical. So here you can assume minus pi by 2. Again you see that the z axis of the 1, 2 and 3 links are same, but here the z axis z3 and z axis z4, this has rotated by 90 degree. z3 यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड से, that यो z3 कितना है, ये इस डायरेक्शन में, एंड जो उसका z4 है ये किस डायरेक्शन में घूम गया, माइनस 90 डिग्री. ओके, माइनस 90 डिग्री में घूम गया ये. सो द अल्फा हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय minus pi by 2. Okay, and the tool has rotated by minus pi by 2. Okay, so this is the representation for this was the representation for kinematic parameters of a alpha second robot using the DH convention. Okay, what is the DH convention now according to your assumption, what I have told you, any feedback from you? DH convention क्या represent करता है, why we use the DH convention? Any student? इसका क्या नाम है इस लड़के का, अचिंत्य तुम बताओ, why we use the DH convention? I don't know, sir. DH convention is simplified convention by which we can represent any robot so that the kinematic parameters of a robotic manipulator can be easily defined and the equations can be derived. Okay, so there should be a certain rules for making this convention about the axes and links. Okay, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करेंगे, और लिंक जो है 1 कहाँ कहलाएगी, फर्स्ट मतलब जो बेस का ओरिजिन है और जो फर्स्ट जॉइंट है बेस से, उसके बाद जो उसके बीच में जो लेंथ आएगी वो लिंक 1 कहलाएगी. इस टाइप से देयर आर सर्टेन DH conventions and a list of rules, you can see that. And I have told you taking the example of arm second alpha second robotic arm. Now I will tell you about the arm equation.
What is the arm? Robotic arm. In a robotic arm, there is a rotation along some axis and also the translation along some axis. Suppose I will tell you ये एक z एक्सिस है, this is the z axis and there is a movement dk in the z axis and rotation of theta k in z axis, and this is a okay, and what is the x axis will be there? x axis और y axis का रिलेशन क्या होता है? ऑलवेज y axis is in 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये ऐसे होगा, तो ये तुम्हारी y एक्सिस बनी। ओके, यू कैन सी द y एक्सिस, x एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। तो ये हमेशा 90 डिग्री इसमें होगा। ये राइट हैंड स्क्रू का फॉलो करता है। व्हेन एवर यू मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन देन यू विल मूव अपवर्ड्स, दिस इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ओके, सो x will always be in the anti-clockwise direction, y will always be 90 डिग्री clockwise direction। यहाँ पे ये रिलेशन होगा, ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो राइट हैंड स्क्रू रूल होगा कि जब भी आप राइट हैंड से टाइट करोगे तो स्क्रू ऊपर को चढ़ता है, ठीक है ना। सपोज दैट यू आर टर्निंग बाय राइट हैंड, देन it will swipe along the xy plane and it will move translational movement in the z direction। ये ऐसे होगा। तो आप यहाँ पे ये आपका जो एक्सिस है, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका x डायरेक्शन कौन सी होगी? सपोज दैट दिस इज द y डायरेक्शन एंड दिस इज द z डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी 90 डिग्री का रिलेशन होगा और इसका भी 90 डिग्री का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे एक मूवमेंट होगा जो लिंक L है, लिंक K है, लिंक लेंथ इज DK एंड देयर इज अ चेंज ऑफ एंगल अलोंग द Z एक्सिस विथ थीटा K। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, आर्म का रिलेशन ये है कि वी कैन आल्सो move the that individual screw or that is end effector with up and we can also rotate the same along the z x axis। तो यहाँ पे x एक्सिस में अगर हम इसका मूवमेंट करें, ये पूरा सिस्टम को हम x एक्सिस में मूव करें और x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, हो सकता, सपोज दैट वन पोजीशन इज दिस, ओके, वन पोजीशन इज दिस, another position may be downwards and it can be some other position will be, suppose some other position will be in this direction and it has also moved a distance AK। ओके, तो यहाँ पे एक रोटेशन भी हुआ, तो इसका जो मैनिपुलेटर है उसकी पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे। ओके, एंड नाउ इट हैज आल्सो रोटेटेड इन इट्स एक्सिस
and it can also vary its length. ओके ये तो जो इसकी एक्सिस है वो तो हमेशा जेड एक्सिस कहलाएगी. सो सपोज दैट another position is this and it has rotated by this and rotated by 90 डिग्री. तो ये है कि एक ही हम इसका साइड व्यू दिखेगा. अब रोटेट हो गया तो साइड व्यू दिखेगा और ये यहाँ पे लेंथ भी इसकी चेंज हो गई. ओके सपोज दैट यहाँ भी आप लेंथ चेंज कर सकते हो. लेंथ भी चेंज हुई और ये घूम भी गया इस डायरेक्शन में. अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज दिस? दिस रिप्रेजेंट्स द आर्म. आप अपनी आर्म अपना हाथ को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, रोल पिच या कर सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं. ओके सो जो बेसिक आर्म इक्वेशन है दैट विल हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके सो this will include the two screw transformations. स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जब किसी एक्सिस के अलोंग हम मूवमेंट करते हैं एज वेल एज रोटेशन करते हैं, दैट इज द स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन. ओके तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं. एक तो यहाँ पे स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एक यहाँ स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रोटेशन एज वेल एज मूवमेंट. ओके ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हेलो यस सर. समझ में आ रहा है? केवल एक ही स्टूडेंट की आवाज आती है और उसकी आवाज में पहचान रहा हूँ, अचिंत की है. बाकी लगता है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या आई थिंक उनको टफ पड़ रहा होगा. तो क्या बाकी स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें मिलेगा? यस सर आ रही है सर. हाँ बस ऐसे ही समझ में आया क्योंकि थोड़ा टफ है रोबोटिक्स. ठीक है तो आप इसको अपना समझिए और मैं आपको विजुअली जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में अब ये बोर्ड तो है नहीं कि रियल टाइम में हम हर चीज़ दिखा सकेंगे, बट हम प्रयास कर रहे हैं कि सब समझाएं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है क्या? हाँ सर. है ना? तो अब आप समझ में आ रहा है कि ये एक आर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है. अब अपने हाथ से कंपैरिजन करो उसको. हाथ की आप एक कलाई है रिस्ट में आप मूवमेंट भी कर सकते हो और लेंथ भी आप बढ़ा सकते हो. पूरे हाथ का लेंथ बढ़ा सकते हो कि नहीं? किसी पॉइंट के लिए लेंथ आप आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हो. फिर उसका आप राउंड भी कर सकते हो. ठीक है और अगल बगल भी अपना हाथ कर सकते हो. तो ये एक बेसिक आर्म रिप्रेजेंट करता है. ओके सो ज्वाइंट पैरामीटर्स हैव बीन टेकन एज डी के थीटा के फॉर फर्स्ट स्क्रू and AK and alpha K for the second screw. AK is the distance of the distance covered in the x direction and alpha K is the angle between the axis of the movement. Suppose that this will be 90 degree. आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 90 डिग्री होगा. ये 90 डिग्री क्यों होगा? इसका एक्सिस जेड है. ओके और ये क्या है? ये इसका एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसके बीच में कितना एंगल होगा? -π/2. ओके तो ये क्या एक क्या रिप्रेजेंट करेगा? -π/2. ओके और ये 1 मीन्स along the x axis. this 3 means the screw 3 here means along the z axis. तो z axis के along थीटा के k equal to 3 थीटा के रोटेशन हुआ and dk is the translation there and similarly in the x equal to 1 k equal to 1 and alpha 1 and a1 is the translation as well as angle movement. तो इसके लिए अब जैसे कि इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन will be represented by suppose that we want to transform the tool point to the previous joint. So here it has used the convention that the previous joint is represented by k and the previous joint is represented by k-1 and the tool position is represented by k. Then transformation from k
tool tip to the previous joint will be given by multiplication of two screw transformations. So if you use the screw transformations as I have told you previously, complete homogeneous transformation अगर आप इसका बनाइए screw transformation का, दो screw transformation का, and then you multiply that, then you will get this matrix. Okay. So in the during the tutorial in the next class, I will give you this problem, and you will have to show how this is coming. Okay. Here another inverse link coordinate transform. Now how you will define the inverse of this, means the transformation of the k minus 1 to the tool tip. Okay. Transformation of joint k minus 1 to the tool tip. Okay. So the inverse transformation is given by this. ये ओरिएंटेशन मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कीजिए आर टी, एंड इसको जो आपका जो आर टी पी बनाइए, यहाँ से पी ये है. ओके, दिस इज पी, देन दिस इज आर आर, and you define the RT from this 3x3 matrix and then multiply by P, then you will get the RTP, and minus RTP will define the new value of the P in the inverse transformation, and the transpose of this 3x3 will define the new orientation matrix in the inverse transformation. Okay, यहाँ समझ में आ गया आपको? यस सर. जिसको समझ में नहीं आया, एक लड़की बोली है कुछ समझ में नहीं आया लगता उसको, तो कुछ बोलना चाह रही है, बोलो. समझ में नहीं आया तो हम फिर समझाएंगे. Now you see here, tool is there and you want to represent here. हम लोग प्रीवियसली अभी कितना क्या कन्वेंशन यूज कर रहे थे कि जिस कोऑर्डिनेट को हम वो करना चाहते हैं, जैसे कि बेस हम फिक्स फ्रेम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम एम नीचे लिखते हैं, एफ वहां लिख रहे हैं. यहाँ रॉबर्ट सीलिंग की बुक में क्या है कि फिक्स फ्रेम को बेस नीचे लिखा हुआ है. तो आपको ये सब कुछ भी आप मतलब अपने हिसाब से कन्वेंशन बना सकते हो. यहाँ पे बेस के रिलेटिव टूल का पोजीशन दिखाया है, ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिखाया है कि बेस के रिलेटिव टूल का क्या है. ओके, तो पहला होगा कि टूल के पास से जो नेक्स्ट ज्वाइंट है वहां का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. देन जो हाँ बोलो. सर टीच इन इंग्लिश. यस. ओके, so there suppose I am giving you example of some links. Suppose that this is the tool tip, and this is the wrist, and this is a joint, this is another joint, and this is another joint, and this is the base. Okay, then the position of this relative to this will be given by suppose tool, and suppose this is 0, first joint, second joint, third joint. Okay, then this 3, and now the transformation is coming from 3 to 2, मतलब 3 we convert all the coordinates to on the basis of 2. Okay, then the transformation from 2 to 1, and then transformation from 1 to base. Okay, base or 0 you can say. Then overall transformation matrix will be tool to ये, this is base. Okay, so this is the represent multiplication of pre-multiplication of all these homogeneous transformation matrices. Okay, is it clear here? नहीं क्लियर है तो पूछ लेना.
हेलो, हाँ बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए लास्ट वाला। लास्ट वाला, ओके। I was discussing this, okay, and suppose this is the tool, okay. यस सर। पुराने कन्वेंशन में हम जिसके बेस पे लेते हैं, जैसे हम कन्वेंशन यूज कर रहे थे कि जैसे कि R01, यहाँ पे हम R01 जो हमने कन्वेंशन यूज कर रहे थे, मतलब हमारा कुल मिला के वी वांट टू कन्फर्म ट्रांसफॉर्म ऑल द कोऑर्डिनेट्स, टूल कोऑर्डिनेट्स टू स्लोली टू द बेस, ओके। तो यहाँ से सबसे पहले वी विल कन्वर्ट this tool position to the base of third joint, then the coordinate position of third joint will be converted to second, and then on the first, and then on the base of 0, that is the rigid frame, or you can say it is base. Then what will be the transformation? First we get the transformation from tool to the third joint, then third joint to the transformation from third joint to the second joint, then I will use the transformation from the second joint to the first joint, then I will use the transformation from first joint to the base, okay. And this is successive pre-multiplication, okay. Then what will be the suppose that there is some coordinate m on the tool, okay. Then what will be the coordinate position on the base of the rigid frame? यहाँ पे rigid frame है, इसके बेस पे इसके हिसाब से क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट? that will be m base, okay, into m base equal to t base, t tool to बेस, मतलब जो है ट्रांसफॉर्मेशन आया है कंप्लीट इनटू एम ऑफ द टूल। इसको पुराना कन्वेंशन जो था थोड़ा सा ये उल्टा था, तो आप उसमें कन्वेंशन पे न जाइए, आप अपने हिसाब से लिख कर सकते हैं कि जब भी हम when we use this transformation to this, suppose we have this is 4, then suppose this is theta 4 and this, then the transformation from along the z along the this is suppose z axis, then the transformation will be c theta 4 minus s theta 4, ठीक है, and s theta 4 and c theta 4, and 0 0 1 0 0 1, हमेशा ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ सब वो पिछले मतलब ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंटिंग टू द बेस, स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स द बेस, ओके। ऐसे ऐसे मूव कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसे जा रहे हैं, ओके। The tool tip positions are represented on the base of this rigid structure, okay। तो यहाँ पे जो बेस के रिलेटिव जो रिस्ट का है एंड रिस्ट के रिलेटिव टूल का है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? टूल रिलेटिव टू द बेस, ओके। ये रिस्ट है, दिस इज द रिस्ट, ओके। सपोज थर्ड इज द रिस्ट, ओके, थर्ड इज द रिस्ट एंड दिस इज द टूल टिप, then wrist tool tip represented on the base of wrist and the wrist represented on the base of rigid structure, okay।
then whole of the transformation will be the multiplication of these two transformations, reached to tool to the wrist, okay, and wrist to the rigid base. ओके, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। स्टूडेंट्स समझ में आ गया? ये अपने समझ लेना, ठीक है। अगर ये इसमें लगे कि इसमें तो उल्टा यूज कर रहा है, तो ये कन्वेंशन है, रॉबर्ट सीलिंग में कन्वेंशन कुछ दूसरा हो सकता है, तो उसकी टेंशन ना लो। लेकिन हमेशा जब हम रिजिड बेस पर कन्वर्ट करते हैं, ओरिजिन जो फिक्स फ्रेम है ओरिजिन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जेड एक्सिस में ले रहे हैं तो ये वाला मैट्रिक्स लगेगा उसमें, दिस मैट्रिक्स, ओके। अगर जेड में कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो जो उसमें मैट्रिसेस पूरे दिए हुए हैं बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का वो लगेंगे, ओके। जब बेस के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करोगे, टूल टिप को मीन्स बेस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बेस ऑफ टूल टिप, तो तब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो जाएगी इसी का, ओके। तो अगर इसमें वो होगा तो दोबारा इसको कवर कर लेंगे इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर। So now the arm equation is also represented like the orientation matrix here and a translation matrix here. This is the homogeneous transformation for the arm, okay, and this is represented by this. Here you can see the tool is converted on the base of wrist is converted on the base of the rigid frame. Then the overall transformation matrix will be the multiplication of these two transformation matrices, and overall transformation matrix will be composing the orientation matrix as well as translation matrix, ठीक है। ये पूरा उसी की तरह होगा। अब यहाँ पे ले लिया है कि 3 का 2 के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द ओवरऑल होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ऐसे ही 2 के 1 के बेस पर 2 का लिया है, तो यहाँ पे होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज किया। देन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑन द बेस ऑफ रिजिड फ्रेम, ये दिस इज द ओवरऑल होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। देन the complete homogeneous transformation matrix for the wrist to base is given by this. Now tool tip, in the tool to the wrist there are two screw transformations, okay, 2 screw transformations are there, then that will be representing the screw transformations, okay। तो ये आप देख लीजिए, ओवरऑल ये आ गया आपका। तो इसको मैं दोबारा भी कवर कर सकता हूं आप चाहें तो, ओके। सो नाउ आई शुड क्लोज द मीटिंग एंड बिफोर क्लोजिंग द मीटिंग आई विल टेक द अटेंडेंस। एनी क्वेरीज फ्रॉम यू? नो सर। So I stop now the recording.